Hello everyone, welcome to Equanity. This lecture series is on the course Game Theory and Strategic Interactions that we have been doing. Now, from today's lecture, we are going to start with Unit 2. In Unit 1, we have already covered what are called simultaneous games, right? And we are, in Osborne, he also calls it strategic games, ठीक है? अब इस क्लास से हमारा यूनिट 1 हमारा पूरा फिनिश हो चुका है, which is including all kinds of, pure strategy equilibria as well as mixed strategy equilibria, which was the last lecture that we did. In today's class, we are going to begin with the second unit, which talks about extensive games, sequential games. So we will understand कि ये games क्या हैं, इनको कैसे define करते हैं, what kind of examples, how to solve them, how to represent them, everything, and a lot of examples from the book also that we will solve over here and understand the basic terminology and everything. So let's get started. All right. So this is what the name of the game is. This is what we will call extensive games of or with perfect information. Now, remember, this is this table I showed to you in the very first class that we were doing. And I told you that there are two kinds of information that exist that, while modeling games. दो किस्म के इंफॉर्मेशन होते हैं गेम के अंदर. एक इंफॉर्मेशन होता है अबाउट द पे ऑफ द प्लेयर, राइट? और दूसरा इंफॉर्मेशन होता है अबाउट द मूव ऑफ द अदर प्लेयर. है ना? अपना इंफॉर्मेशन तो सबके ही पास है, हमें पता है हमें क्या चाहिए, हमें पता है हम क्या चलने वाले हैं और हमने मतलब पहले क्या चला है. लेकिन क्या डू यू नो दैट व्हाट द अदर प्लेयर इज व्हाट द अदर प्लेयर्स मूव वाज? डू यू नो दैट व्हाट द अदर प्लेयर्स पे ऑफ इज, राइट? सो देन वी सेड दैट वी कैन बिल्ड अ मैट्रिक्स जिसमें कि अगर हम मूव के इंफॉर्मेशन की बात करें, that is whether you know it or you don't know it. If you know it, it is called perfect information. All right. And if you don't know it, it's called perfect information. If you do not know it, then it is called imperfect information. On the other hand, there is also information pertaining to payoffs. अगर पे ऑफ पता है सामने वाले प्लेयर का तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन, राइट? एंड अगर पे ऑफ्स भी नहीं पता, अगर पता ही नहीं है कि सामने वाला प्लेयर एग्जैक्टली क्या चाहता है, तो हम उसको incomplete information बोलते हैं. So the first part of your course is where we only deal with games of complete information, जहाँ पे at least ये तो पता है कि सामने वाले का pay off क्या है. All right. So this row is what we are going to deal with, right? And this is the second part of the course where even the payoffs become unknown. ठीक है? अब जैसे मैंने बताया था, we started with this. We started with strategic games or simultaneous games, right? So information about payoff was पूरा, लेकिन ये नहीं पता था कि सामने वाले का move क्या है. So those are games with imperfect information, है ना? उसमें हमें तुम चले रॉक पेपर सीजर में, तुमने ये नहीं पता कि when you choose rock what the other person is going to choose, right? So we are in that sort of, we were doing those sorts of games. Prisoner's Dilemma हो गया और सारे battle of sexes and stag hunt and everything. Now we are going to do this number 2, जो सेकंड कैटेगरी है, इन विच ऑफ कोर्स पे ऑफ्स आर नोन. लेकिन अब तुम्हें ये पता है कि तुमसे चलने के पहले गेम में क्या क्या हो चुका है, दूसरे प्लेयर या प्लेयर्स ने क्या सब मूव किया है. सो इट इज नाउ वी आर इन द लूडो सॉर्ट ऑफ सेटअप, वी आर इन द चेस सॉर्ट ऑफ सेटअप. ऑल्दो बोथ ऑफ दीज गेम्स आर वेरी वेरी much more complicated than the kind of games that we're going to look at in this. Okay, so let us get started. Now the thing is that why do we want to look at such games? A lot of times the games will be where you can observe what the other player has done and then you have to take a move for yourself. है ना? तो इसमें तो हम examples करेंगे ही. You can also think of interactions in which some sort of threat is involved. So you can think के मान लो कि there are two players and one of the player is a kid, right? Another player is the parent. So ऐसे सोचो कि parent ने कहा, राइट? सो किड्स इन अर्ली एज, किड्स टेस्ट दी बाउंड्रीज, है ना? वो कहते हैं कि अच्छा इतना किया तो पेरेंट मतलब मम्मी पापा ने जो है वो हंसी मजाक में उड़ा दिया. फिर थोड़ा और वो बाउंड्री टेस्ट करते हैं, अच्छा डांट पड़ी. फिर थोड़ा और टेस्ट करते हैं कि अच्छा अभी तो बिल्कुल ही मतलब सीरियस लुक दिया जा रहा है. एंड देन दे क्रॉस अ थ्रेशोल्ड जहाँ पे एटलीस्ट इंडिया में तो यू गेट,
right? You get what you get. So the idea is that suppose the parent has, this is also a game, है ना? तो याद करो हमने simultaneous में हमने we also modeled games between siblings, at least matching pennies kind of games, in which one sibling, the younger sibling, wants to match, and the older sibling wants to create an own identity, do not want to be seen with the younger one, seen like the younger one. So similarly between parents, suppose parent has said that if you do this, you're gonna get thrashed, अभी बहुत मार पड़ेगी, and बच्चा then has to decide कि करना है कि नहीं करना है, and depending upon किया या नहीं किया, then the parent takes an action कि मतलब मारा या नहीं मारा, है ना? So these are the kind of things where you take an action, you observe, right? Or rather, when it is your turn to move, at least जो भी इस गेम के horizon में हो चुका है, you observe. So in this case, if you are the child, of course you do not observe कि parent ने क्या किया, but as the parent you observe कि बच्चे ने क्या किया है. लेकिन ये जो structure है game का, ये सबको पता है. So pay off सबको पता है. तुम्हें भी पता है कि बहुत ज्यादा पिटाई अगर तुम्हारी हो जाए, तो even your parents are going to feel bad. So if your mom says that I'm going to kill you if you do this, you know that she's not going to kill you, right? But you can expect कि solid damage तो आने वाला है. तो इस तरीके की चीज we will do much more concrete examples जहाँ पे the moves and the payoffs will be much more clearly defined. But this kind of interaction always happens, and even though you have observed what the previous player is doing, previous player has done, फिर भी एक strategic angle होता है उस decision. All right. So now let us talk about कि अगर हम ये गेम का ambit ऐसा करते हैं कि everyone observes, we include this sequential angle, है ना? हम गेम को ऐसा कोलैप्स ना करें, हम उसको जो टाइम के अक्रॉस मूवमेंट है उसको कैप्चर करना चाहें. सो देन हाउ विल वी कैरेक्टराइज दिस गेम, है ना? सो उस केस में अगर हमें एक्सटेंसिव गेम विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल करना है, वी नीड additional information from what we were working with earlier. So earlier we had the set of players, we had the payoffs, right? We had the actions, है ना? अभी हमको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए. सो वी नीड द सेट ऑफ प्लेयर्स, वी नीड प्रेफरेंसेस, मतलब यूटिलिटी जो भी उससे मिले हो तो हमें चाहिए. हमको ऑर्डर ऑफ प्लेयर्स भी चाहिए कि कौन किसके बाद चल रहा है, ठीक है? इसको हम डिनोट करेंगे व्हाट इज कॉल्ड ए प्लेयर फंक्शन. और we will make everything formal, clear right now. Then we also know, we also want के हर एक पॉइंट पर गेम में बहुत सारे पड़ाव होंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये चलेगा. तो जब भी जिस भी प्लेयर के चलने की बारी है, उस पॉइंट पे उस प्लेयर के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ एक्शंस, राइट? सो द चाइल्ड कैन चूज के भाई ये आई मीन सम नॉटी हरकत करनी है कि नहीं करनी है. पेरेंट की बारी आएगी तो पेरेंट को भी चूज करना है कि इग्नोर करना है कि दनादन दे देना है, या फिर कोल्ड ट्रीटमेंट देना है. सारे ऑप्शंस हैं पेरेंट्स के पास भी. सो देन all these things have to be specified, right? To fully specify the game. And then you also need to specify all possible outcomes, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनल हिस्ट्रीज. ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अगर ये हुआ तो ये हुआ तो ये होगी. एक पॉसिबल सेट ऑफ आउटकम मतलब एक पॉसिबल path of how things will unfold is this. Another possible path of how things will unfold is this. And because there exist more than one ways in which outcome can happen, इसी यही चीज is the reason for strategic involvement. This is the reason for uncertainty. This is where choice lies. This is where strategic interaction lies. अगर एक ही possible outcome होता तो फिर क्या ही, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या choose करता है. But because you have different possible outcomes that can be reached, that is where the fun is. All right. Okay. So then, extensive games with perfect information, right? They will have 4 components. The first component, of course, will be players. The second component will be all the possible outcomes, right? So we will call them terminal histories, which is the set of all possible outcomes
जो भी इस गेम में पॉसिबिलिटी है चीजें होने की, अनफोल्ड किस तरह करेंगी चीजें। वी विल ऑल्सो हैव व्हाट इज कॉल्ड ए प्लेयर फंक्शन। ठीक है, प्लेयर फंक्शन क्या है? प्लेयर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट विल एसेंशियली टेल यू कि हर नोड पे गेम में किस प्लेयर की बारी है। सो लेट मी जस्ट राइट इट व्हेन वी विल डू द गेम, एंड अगेन वी विल फिल द फॉर्म। जैसे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सो प्लेयर फंक्शन इज ऑफ कोर्स अ फंक्शन। सो फंक्शन का क्या मतलब है कि कुछ इनपुट लेगा और वो इनपुट लेने के बाद एक आउटपुट थ्रो करेगा। सो इनपुट में क्या जाता है? इनपुट में जाता है इसके एक पर्टिकुलर हिस्ट्री, राइट? इतना हो गया, अब किसकी बारी है? और आउटपुट में क्या जाता है? किसकी बारी है ना? सो कहीं भी तुम हो अपना मतलब इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री एट दिस पॉइंट हुज, so this is the point that we are, right? You put it in the player function will tell you कि अब किसकी बारी है। So it will assign a player to any, I'm using these terms, this will become clear जब हम करेंगे, to any proper sub history, all right? And number 4, we have preferences. Preferences for each player, for each terminal history. Terminal history. All right. अभी देखो, एक गेम करते हैं. This is the game that is used mostly in your textbook, and this is what we will do. It's a simple game. This is called, so this is example from book, and this is just called an entry game. इसका क्या सीन है कि एक इनकम्बेंट है. इनकम्बेंट मतलब जो भी पार्टी एस्टैब्लिश्ड है. सो यू कैन थिंक ऑफ अ फर्म, एन एस्टैब्लिश्ड फर्म. यू कैन थिंक ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी. यू कैन थिंक ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड व्हाटएवर प्लेयर हो गया, कोई भी कहीं भी. This incumbent is facing the threat of a challenger, threat of entry from a challenger. चैलेंजर मतलब एक नया खिलाड़ी, एक नया पार्टी, विच इज डिसाइडिंग कि ये जो भी फील्ड में इन विच द इनकम्बेंट इज ऑपरेटिंग, शुड आई मेक एन एंट्री और नॉट. ठीक है, सो ये चैलेंज है. जैसे तुम सोच लो कि कोई एस्टैब्लिश्ड फर्म है, दिस इज अ मोनोपोली, और यू नो सम इन अ दिस फर्म हैज अ लॉट ऑफ मार्केट पावर, मैक्सिमम मार्केट शेयर है. और अब इसको इसको पता है कि एक जो नया फर्म है, एक चैलेंजर फर्म जिसको हम बोलेंगे, दिस स्टार्टअप थिंग इज ट्राइंग टू डिसरप्ट द मार्केट, और ये घुसने का प्लान कर रहा है. ठीक है, सो ये द सीक्वेंस ऑफ द गेम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द चैलेंजर मेक्स अ मूव, क्योंकि अगर घुसने का प्लान प्लान कर रहा है, प्लानिंग पे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं बनेगा ना इनकम्बेंट का. इनकम्बेंट का रिस्पॉन्स बनेगा कि एंट्री हुआ या नहीं हुआ. So the challenger will first of all make a move that whether the challenger decides to enter or not. And then seeing the move of the challenger, the incumbent is then going to decide whether to fight or to acquiesce. Acquiesce मतलब accommodate कर ले, चल ठीक है साथ में रह लेते है ना. तो यू कैन थिंक कि अगर हम कोई मार्केट की बात कर रहे हैं, अगर हम कहीं मार्केट सेटिंग की बात कर रहे हैं जिसमें एक चैलेंजर फर्म है जो एक नया फर्म है, और एक इनकम्बेंट फर्म है जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फर्म है. नाउ इफ द चैलेंजर एंटर्स, द इनकम्बेंट के डिसाइड टू द फाइट. सपोज प्राइस और उस पर कर दिया, तुम नए हो, तुम कितना प्राइस कट कर लोगे, बट हमारे पास तो पूरा मशीनरी है, हम तो वैसे भी मोनोपोली थे, हमारे प्राइसेस तो वैसे भी इन्फ्लेटेड ही थे. ठीक है, सो देन आई विल अंडर कट यू, राइट, एंड देन आई पुट यू आउट ऑफ बिजनेस. दूसरा ऑप्शन है, चल ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं, तुम थोड़ा मार्केट लो, हम भी थोड़ा कट कर लेंगे, एंड यू नो वी विल लिव टुगेदर, नॉट वेरी हैप्पीली बट जस्ट लाइक दैट, राइट. सो देन द आइडिया इज दैट इस गेम क्या है, इसमें इसमें मतलब कैच क्या है? कैच ये है कि अगर फाइट करता है इनकम्बेंट तो इनकम्बेंट का भी नुकसान है ना. अगर तुम प्राइस वॉर करते हो, याद रखो, एनी काइंड ऑफ प्राइस वॉर इज हार्मफुल फॉर बोथ पार्टीज. इट कैन बी हार्मफुल फॉर मोर, इट कैन बी मोर हार्मफुल फॉर वन पार्टी, जो इस केस में चैलेंजर है, नया फर्म है, और बट इट विल ऑल्सो बी हार्मफुल फॉर द एस्टैब्लिश्ड पार्टी बिकॉज यू विल लूज ऑन योर रेवेन्यूज, राइट. You have set a price that maximizes your profit. So if you reduce that price, you are going to face at least a short term reduction in profits. On the other hand, if you acquiesce, तो एक समझ लो बीच का आउटकम है. From the point of view of the challenger, like sorry, from the point of view of the incumbent, of course the best outcome is कि challenger बाहर रहे.
ठीक है, सो इसको हमने मॉडल करना है एंड टू डू दिस, सो एंट्री गेम है, इसमें वी विल फिल अप द फॉर्म, प्लेयर्स हैं हमारे, right? Players are your incumbent. I will just call it INC, and challenger. We can call it, chalo, theek hai, challenger. Let me write it full first. Challenger and incumbent, right? Then this is the first thing that we have filled. Now, the second thing is we have to see how the game unfolds, है ना? तो फॉर्म फिल करने के पहले हमको, if we can visually represent the game, it will be much more easier, right? So we will first of all represent the game in the form of a diagram. समझने के लिए डायग्राम की तरह रिप्रेजेंट कर दिया तो इमीडिएट विजुअलाइजेशन होगा. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल से दैट द बिगिनिंग इज, ये 0 इज वेयर यू हैव, वेयर योर गेम स्टार्ट्स, है ना? तो इसके पहले कुछ नहीं हुआ है. इस 0 पे इट इज द चैलेंजर हु मूव्स. चैलेंजर के पास दो ऑप्शन है, वेदर टू एंटर, right, whether to stay out. So we can say whether the challenger is in or out, right? अब चैलेंजर चाहे इन हो चाहे आउट हो, अगला डिसीजन, अगला मतलब मूव इज विद द incumbent. But if the challenger is out, then there is nothing to do for the incumbent, right? So if the challenger chooses out, here the game essentially ends, right? So when you have reached a node like this, जहाँ पे उसके बाद कोई भी player assigned नहीं है ना? So then what we have is that the game has ended, all right? Over here, if the challenger actually enters, then the move is of the incumbent. And then the incumbent can decide whether to fight or to acquiesce. Agar, so let's write it like this. What is in your book? So the first is the challenger can decide that, I want to acquiesce and I want to fight. If the challenger, now let us see कि हर possible outcome में payoffs कितने हैं, ठीक है? So the complete representation of the game is where you specify कि यहाँ पे outcome में कितना payoff है. इस वाले में you have 2,1, इस वाले में you have 0,0, and this where game ends, it means that a game ends, so I'm just erasing that. If the game ends, then your outcome is 1,2. Now see what happens. कैसे proceed, कैसे what are the different possible outcomes that this game can happen? One is that challenger starts the game, stays out, right? So staying out मतलब कि आगे game बढ़ा ही नहीं. तो एक possible outcome क्या हुआ? That the challenger stays out. Now, since this is the way in which the payoffs are written, तो remember that as usual, जैसे हम simultaneous game में भी करते थे, the order matters. पहले प्लेयर का पे ऑफ पहले होता है, सेकंड प्लेयर का पे ऑफ सेकंड होता है. इस केस में हमने रैंडम असाइनमेंट नहीं किया है 1 और 2 का. हमने मतलब द असाइनमेंट ऑफ प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 इज बेस्ड ऑन द टाइमलाइन ऑफ द गेम, है ना? तो चैलेंजर का पहले मूव है, तो चैलेंजर पहला प्लेयर है, प्लेयर 1 इज चैलेंजर, प्लेयर 2 इज इनकम्बेंट in terms of when they move. So the first number in the payoff bracket belongs to the challenger, the second number belongs to the incumbent. So now if the challenger stays out, that is one possible outcome, right? Then the challenger gets a payoff of 1 and the incumbent gets a payoff of 2, right? If on the other hand challenger enters, तब फिर आती है incumbent की बारी कि अब क्या करेंगे. Incumbent अगर तो acquiesce कर लेता है, अगर accommodate कर लेता है, then this is the payoff. In that case, that is the best case scenario for the challenger, right? You see here, this is the best case scenario for the challenger, right? Or compared to this, you see that compared to the case where the challenger stayed out, you see that incumbent का
थोड़ा कम है पे ऑफ, राइट? कंपेयर टू द केस वेयर द चैलेंजर स्टेज आउट, चैलेंजर इज बेटर ऑफ, कि तुम मार्केट में भी घुस गए, है ना, और तुम्हें प्राइस वॉर भी नहीं मिला, तो बेस्ट आउटकम है ना तुम्हारे लिए, तुमको मार्केट में जगह भी मिल गई, यू डिड नॉट हैव टू फेस एनी predatory practice from the already established form. That's your best outcome. The third is when the incumbent decides to fight. अब यहाँ पे प्राइस वॉर हो गया है, यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों का ही बहुत भारी नुकसान है, दोनों के लिए ये वर्स्ट आउटकम है, राइट? सो व्हाट वी हैव इज दैट इनकम्बेंट तो है ही, मतलब इनकम्बेंट को तो अगर घुसते ही प्राइस वॉर हो गया तो सबसे बेकार आउटकम वो है, और फॉर दी सॉरी चैलेंजर के लिए सबसे बेकार आउटकम वो है तुम नए फॉर्म और घुसे, तुम्हारा सत्यानाश हो गया। इनकम्बेंट के लिए भी इट इज नॉट अ कॉस्ट लेस फाइट, यू हैव टू ऑल्सो, दिस इज द वर्स्ट आउटकम फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, सो ये हमारा गेम का स्ट्रक्चर है। अब इस गेम के स्ट्रक्चर को लेकर हम ये फॉर्म फिल करेंगे। सो वी ऑलरेडी हैव प्लेयर नंबर 1 चैलेंजर है, प्लेयर नंबर 2 इनकम्बेंट है, राइट? अब हम इसमें डालते हैं सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्या था हमारा, terminal histories, right? This is what we need to fill next. So let's do that. Terminal histories. What do we have? क्या क्या all possible outcomes चाहिए? एक possible outcome क्या है? Out, right? दूसरा possible outcome क्या है? ये वाला thread follow करें अगर, हाँ, so what is it? In, comma, acquiesce, and तीसरा क्या है? In, comma, fight, which is this, right? So you entered, the incumbent entered and the challenger entered, incumbent decide के, ठीक है। ये 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनको हम बोलते हैं टर्मिनल हिस्ट्रीज। वाई हिस्ट्री से हम वी विल टॉक मोर अबाउट हिस्ट्री, बट थिंक अबाउट कि हिस्ट्री मतलब कि यू सपोज तुम गेम के एंड में खड़े हो तो क्या क्या हुआ फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है? सो ये पूरा हिस्ट्री है। वाई टर्मिनल? क्योंकि ये गेम को अंजाम तक ले जाती है, इसके बाद गेम खत्म हो जाता है ना। तो जो भी हिस्ट्री में गेम एंड तक पहुंच जाए उसको हम बोलते हैं टर्मिनल हिस्ट्री। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ हिस्ट्रीज विच वी विल डू, ऑलराइट? सो टर्मिनल हिस्ट्री हो गया। अब थर्ड थिंग क्या था यहाँ पे हमारे पास? प्लेयर फंक्शन, ठीक है? लेट्स सी व्हाट द प्लेयर फंक्शन इज। प्लेयर फंक्शन क्या है कि यहाँ पे है, व्हेन यू लुक एट दिस पॉइंट, राइट, दिस इज अ पॉइंट वेयर द गेम हैज नॉट स्टार्टेड, तो हम इसको बोलते हैं नल हिस्ट्री, मतलब कोई हिस्ट्री नहीं है इस पॉइंट। तो इसको डिनोट करने के लिए वी यूज फी, राइट? एनीवेज, सो प्लेयर फंक्शन में हम अभी सिंपली लिख देते हैं कि प्लेयर फंक्शन असाइंस चैलेंजर टू द स्टार्ट ऑफ द प्ले एंड आफ्टर हिस्ट्री इन, अगर चैलेंजर ने इन घुसने का डिसीजन लिया तब इनकम्बेंट इज असाइंड। इसके अलावा प्लेयर फंक्शन के पास कोई इनपुट नहीं है, क्योंकि ये एक टर्मिनल हिस्ट्री है। अगर आउट की तरफ तुम सोच रहे हो कि आउट होने पे क्या होगा, तो तुम्हें भी पता है कि आउट होने के बाद गेम समाप्त है, फिर कोई असाइनमेंट नहीं है। क्यों? द वे टू थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ, और जो सिक्वेंशियल गेम के लैंग्वेज में हम कहेंगे वो है कि यहाँ पे दिस इज अ टर्मिनल हिस्ट्री एंड अ प्लेयर फंक्शन में जो इनपुट जाता है, जो आर्ग्यूमेंट जाता है, वो नॉन टर्मिनल हिस्ट्रीज जाते हैं। जब गेम खत्म हो गया तो ऑब्वियसली क्या ही किसको असाइन करोगे, वो सारे हिस्ट्री जाएंगे जहाँ पे गेम खत्म नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक सब हिस्ट्री, एक प्रॉपर सब हिस्ट्री। Okay, before we go into defining all the histories again, the final thing is the preference, right? So preferences will be assigned for each player and for each terminal history, क्योंकि गेम खत्म होने के बाद ही प्रेफरेंस देखने का मतलब है। तो यहाँ पे हमने प्रेफरेंसेस ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिए हैं। दिस इज द वेरी वेरी हाई यूजफुलनेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द गेम इन दिस डायग्राम फॉर्म, जहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं, एक आइडियल लिखने का तरीका तो क्या है, कि दैट द यूटिलिटी ऑफ से प्लेयर 1, है ना,
तो यूटिलिटी ऑफ प्लेयर वन in this terminal history is the highest, followed by this terminal history, followed by this terminal history, right? So we can write it like this, that the payoff or the preferences. So for player one, which is the challenger, player one prefers this terminal history in comma aqueous the most, followed by out, followed by in comma fight, right? And in terms of for player two, what is the best outcome? The best outcome is that incumbent remains out. Then, of course, enters and it acquiesces. And then it enters and it fights. ठीक है. So you can, as we know कि ये मतलब जो ये 1012 है, ये any numbers है, utility is ordinal. So you can have written any number that follows this order. Simplest is the basic numbers, right? So any number that follows this order will represent preferences of the challenger and the incumbent. Okay. All right. So now, before we go ahead and before we look at another example from the book, पहले हम the need is to differentiate between these various kinds of history term जो मैं तुम्हारे ऊपर फेंके जा रही हूँ, right? So we have different kinds of histories. We have a simple history. We have a terminal history. We have a sub history. We have a proper sub history. ठीक? So ये सारे terms and null list भी बोला मैंने. So ये सारे terms हम पहले let us get them out of our way and clearly understand कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, इन सब terms का क्या meaning है. Different kinds of histories, right? Pehla, the most generic term is what is simply called a history. History क्या है? History कुछ भी नहीं है. It is any sequence of actions, है ना? Any sequence of actions मतलब of course जो actions game में actually follow हो सकते हैं. तो out और F कोई history नहीं है. ये कभी नहीं हो. Any sequence of actions in the actual way in which the game is played. All right. So history is what? Any sequence of actions, right? Starting from the start. And the other important thing is that you have to start from the start when no player has played, when no player has moved. Okay? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि इसके बाद ये गेम और चलता, अगर कोई ऐसा गेम है जहाँ पे ये प्लेयर वन चले ऐसा, फिर प्लेयर टू चले ऐसा, फिर प्लेयर थ्री चले ऐसा, फिर प्लेयर फोर चले ऐसा, तो कोई भी हिस्ट्री होगा ना, वो हमेशा यहाँ से ही शुरू होगा. All right. So you can have a history like this. You can have a history like this. You can have a history like this, right? But you cannot call it a history if suppose you are starting over here and ऐसे चले गए. इसको हिस्ट्री नहीं बोल सकते. हमेशा शुरू से जो भी हुआ उसको हिस्ट्री बोलना है. ये और ये हिस्ट्री नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हो गया तो ये कभी नहीं होगा. हाँ, फिर से इट इज नॉट अ हिस्ट्री. सो हिस्ट्री मतलब गेम जैसे चल सकता है वैसे ही चले, बट ये तुम्हारा चॉइस है कि तुम टर्मिनेट कहाँ पे करो. So you can start over here and end it here. That is also possible. This is what is called null history, right? Or you can start and you can get in this direction and this direction, right? Or you can start and get in this direction and this direction. Sorry, this direction, फिर ये direction, फिर ये direction, फिर ये direction. You can go anywhere. You can also stop just in between. So यहाँ से शुरू करके यहाँ भी एक history है. Right? So जहाँ भी गेम का सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलो, बस यही इंपॉर्टेंट है.
और जंबल नहीं करनी है चीजें, बीच से नहीं शुरू करना है, ये एक हिस्ट्री है। नाउ द सेकेंड टर्म दैट आई सेड वाज null history. Null history is basically the start of the game, right? When no player has moved, and we denote it by phi. PHI, ये ग्रीक लेटर है, इसको फी बोलते हैं, और नल हिस्ट्री को हम फी से डिनोट करते हैं, ठीक है। देन द थर्ड इज व्हाट इज कॉल्ड ए सब हिस्ट्री, right? So sub history is set, so sub history you can think of is like the set of subsets. So it is the set of all finite sequence of actions. ठीक है, so it can be, of course, you can have a sub history which is just the start of the game. You can have a sub history जहाँ पे start of the game के बाद कोई action लिया गया है, या फिर start of the game के बाद action A1 फिर action A2 blah blah blah, ये सारे सब histories हैं। Now you will think कि history और सब history एक जैसा ही लग रहा है ना, ये सब मैं सेम ही बात रिपीट कर रही हूँ। The idea is कि जैसे set और subset एक जैसा लग सकता है सिवाय एक फर्क के, प्रॉपर सब हिस्ट्री, है ना। सो प्रॉपर सब हिस्ट्री वो है, उसके लिए हमको डिफाइन करना पड़ेगा टर्मिनल हिस्ट्री टू बी एबल टू डिफाइन अ प्रॉपर सब हिस्ट्री। सो अगेन रिमेंबर के हम लोग हमेशा स्टार्ट जो है, स्टार्टिंग फी से ही है। अक्सर फी को सप्रेस किया जाता है, लिखना जरूरी नहीं है, बट हमेशा रिमेंबर की गेम की स्टार्ट से ही स्टार्ट करना है। ऑलराइट, द फोर्थ इज व्हाट इज कॉल्ड ए टर्मिनल हिस्ट्री, है ना। सो टर्मिनल हिस्ट्री इज एनी सब हिस्ट्री दैट टर्मिनेट्स द गेम। Right? Any sub-history that terminates the game is the terminal history, just how we already saw. And finally, with this knowledge, we can understand that what is a proper sub-history. Proper sub-history is a sub-history which is not terminal. सो प्रॉपर सब हिस्ट्री मतलब जो भी सब हिस्ट्री गेम को समाप्त ना कर दे, बीच में कहीं रुके, वो है प्रॉपर सब हिस्ट्री। जस्ट लाइक अ प्रॉपर सबसेट, अ प्रॉपर सबसेट इज नेवर द एंटायर, मतलब प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि एक ना एक एलिमेंट जो तुम्हारे सेट में है वो मिसिंग हो प्रॉपर सबसेट में से। प्रॉपर सबसेट एंटायर सेट नहीं होता है। सिमिलरली प्रॉपर सब हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री जिसमें के गेम एंड तक नहीं पहुंचा है, कहीं बीच में होता है, एक ना एक एक्शन इज स्टिल वेटिंग टू बी हैपेंड। ऑलराइट, सो as we can imagine, all terminal histories, right, are sub histories, but all sub histories are not terminal histories। ठीक है, ओके। सो अभी देख लेते हैं कि हमने जो इसके लिए लिखा था उसमें क्या है। ये हमारा टर्मिनल हिस्ट्रीज था। नाउ यू विल सी दैट ये टर्मिनल हिस्ट्री है ना, ये टर्मिनल हिस्ट्री है, ये टर्मिनल हिस्ट्री है। कहीं भी प्लेयर फंक्शन में, मैंने क्या बोला, प्लेयर फंक्शन में यू विल सी दैट, वेयर वाज इट, या प्लेयर फंक्शन में वी सेड दैट प्लेयर फंक्शन इनपुट में क्या लेता है, सब हिस्ट्री, सॉरी प्रॉपर सब हिस्ट्री, विच मेक सेंस। अगर गेम खत्म हो गया तो प्लेयर फंक्शन का कोई काम नहीं है, प्लेयर फंक्शन का भी काम खत्म हो गया। सो इन द आर्ग्यूमेंट पोर्शन इट विल गो प्रॉपर सब हिस्ट्री, राइट। सो रिमेंबर ये सारे टर्मिनल हिस्ट्रीज हैं, ये सब प्लेयर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में नहीं गए। लेट अस रीस्टेट द प्लेयर फंक्शन। सो प्लेयर फंक्शन में लेट अस डिनोट इट बाय पी फी। जब कोई भी हिस्ट्री नहीं है, ऑफ कोर्स रिमेंबर नल हिस्ट्री इज अ प्रॉपर सब हिस्ट्री ऑफ एनीथिंग, है ना। नल सब हिस्ट्री हमेशा एक प्रॉपर सब हिस्ट्री, वहां पे गेम शुरू ही हुआ है तो अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ। सो पी फी वाज योर चैलेंजर।
एंड अनदर प्रॉपर सब हिस्ट्री क्या है इस गेम का? इन, एंड दिस इज इनकम्प्लीट. So this is the formal way in which you write the player function. जहां पे भी गेम खत्म नहीं हो वहां पे तुम्हें असाइन करना है प्लेयर फंक्शन से. ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट द सेट ऑफ सब हिस्ट्रीज इन दिस गेम. पहला ऑफ कोर्स क्या है? पी है. दूसरा क्या है? इन है, एक पॉसिबल. एक क्या है? आउट है. आई एम जस्ट पुटिंग इट इन ब्रैकेट्स. Another is this, another is this, another is in comma aqueous, another is in comma fight. ये इस गेम का कंप्लीट सेट ऑफ हिस्ट्रीज है. हिस्ट्री, सब हिस्ट्री, वट एवर, राइट. दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ हिस्ट्रीज. इनमें से ये टर्मिनल है. ये प्रॉपर सबस हैं, प्रॉपर सब हिस्ट्रीज हैं, राइट. And this entire set is all subhistories. Yeah, all histories. हाँ, so what you must have understood is कि history हम किसी भी चीज को कहते हैं. So history is the generic term. उसके बाद if it is terminal, if it is proper sub history, null history, वो सारे history के प्रकार हैं. So you can always use history, whichever specific history you want to talk about, you have a name for it. Alright, so you have terminal histories which end the game over here, right? And then you have proper sub-histories which still have one player deciding to make a move at least. Alright, okay. So now before we go into discussing a couple of examples that are there in your book, let me also define at this point what are called finite horizon and finite games. So ये दो terms हैं. Finite horizon क्या है कि if the length of the longest terminal is finite. So finite horizon is when the length of the longest terminal history, right? I'm just writing terminals, but it of course means terminal history is finite, right? So it is not the case के पहले challenger फिर incumbent फिर challenger फिर incumbent फिर challenger फिर incumbent और ये चलते ही जा रहा है. नहीं, you define a definite boundary for the game, उसको बोलेंगे finite horizon game. This is different from what is a finite game. Finite game is, of course, you need finite horizon, right? Plus you need finite number of terminal histories. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हारे एक्शंस हमेशा डिस्क्रीट हो और काउंटेबली फाइनाइट हो. मतलब कि अगर सपोज when you are considering that whether, suppose you are considering a move in which you say कि you have to choose the price of something. Now price can be anything. ना price का कोई finite वो तो है नहीं. So even though the game does end, when you choose the price, suppose game ends. But the point is that price is a continuous variable, right? Any value on the real line can be a price. Even if you have a boundary specified, तभी भी price discrete नहीं है. And a price is infinite. And that will not be a finite game. So it will be a finite horizon game, लेकिन वो finite game नहीं हो. So basically, जब भी actions जो तुम्हारे हैं लोगों के पास available, तुम्हारे players के पास जो actions available हैं, they should be discrete, they should be finite. Right? So जितने तुम्हारे terminal histories हैं, वो infinite ना हो. तो जब finite length हो terminal history का और the number of terminal histories is also finite, then you got what is called a finite game. All right.
All right, so now let us look at a couple of games that are, let us solve a couple of games that are there in your book. Let's. So this is a game which is the first question that they have asked in Osborne. Exercise 154.2. Now we want to represent, the question says that represent in a diagram like the one we have just drawn, two-player extensive game with perfect information, blah, 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 in which the terminal histories are the following. You know? And the player function is this. So they have specified the terminal histories, right? And they have also specified the player function. So we will use all this information, right? We will use all this information and create the kind of game. This is the preferences have also been specified. We will create the kind of game that we have for the entry game. ठीक है? So अभी क्या है? First of all, terminal histories क्या है? CE, CF, DG, DH. उसके पहले player function देखते हैं. So first of all, when the game starts, look at this, that your P phi is player 1, है ना? And PC is equal to PD. इसका मतलब क्या है कि प्लेयर 1, अब तुम्हें डिड्यूस करना है इससे. द प्लेयर फंक्शन गिव्स कि अगर जब हिस्ट्री C हो गया, तब कौन से प्लेयर का मूव है? प्लेयर 2. सिमिलरली जब हिस्ट्री इज Similarly, when the history is D, when you put this history, the proper subhistory into the player function, what you get? Answer player 2. इसका मतलब कि प्लेयर 1 के पास कौन कौन से एक्शंस अवेलेबल हैं? C and D. And after both of these actions, player 2 की बारी आती है खेलने की. It is the player 2's turn to move. And what is the other thing? अब यहाँ पे तो गेम खत्म हो जाता है क्योंकि प्लेयर 2 के बाद प्लेयर फंक्शन ने और किसी चीज को कहीं पे असाइन नहीं किया है ना? सिर्फ ये दो हिस्ट्री में दूसरा प्लेयर असाइंड है, नल हिस्ट्री में प्लेयर 1 असाइंड है, राइट? नल हिस्ट्री में प्लेयर 1 असाइंड है और C और D के बाद प्लेयर 2 असाइंड है. नाउ प्लेयर 2 के पास क्या ऑप्शन है? नाउ यू कैन सी दैट फ्रॉम दी टर्मिनल हिस्ट्री. टर्मिनल हिस्ट्री में क्या लिखा है? CE, CF, DG, DH. इसका मतलब कि प्लेयर 2 के पास कौन कौन से ऑप्शन हैं? C के बाद क्या क्या आ सकता है? E और F. और D के बाद क्या क्या आ सकता है? G and H. This is the game, right? So we get the terminal histories that there were. कौन से थे terminal histories? हमें क्या मिले? CE मिल गया, CE. दूसरा CF, CF. तीसरा DG एंड DH. मिल गया सारा? सारे टर्मिनल हिस्ट्रीज मिल गए, प्लेयर फंक्शन सेटिस्फाई हो गया. नाउ द प्रेफरेंसेस. नाउ वी जस्ट नीड टू पुट नंबर्स. सो व्हाट वी हैव इज that player 1 prefers CF to DG to CE to DH. तो इसको पहले हम लिख लेते हैं. How we can write it? For player 1, है ना? We have CF is preferred. Player 1 prefers CF to DG to CE to DH. Right? So you can start you can start from 0, you can start from 1, you can start from damn any number that you want. ठीक है? बट हम सिंपली स्टार्ट करेंगे. सबसे कम ये है, इसको 0 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं. Secondly, for player 2, what do we have? DG is preferred to CF, is preferred to DH, is preferred to CE. Again, 0, 1, 2, 3. So let's see. CF में player 1 का कितना है? 3. CF, right? Player 1 gets 3 and CF में player 2 gets 2. Then DG में 2, 3. CE में player 1 gets 1 and CE में player 2 gets 0. And finally DH में player 1 gets 0 and DH is where player 2 gets 1. That's it, right?
इसमें तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू, नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन डायरेक्टली, राइट? सो यू हैव टू बी केयरफुल कि यू हैव टू डिड्यूस इंफॉर्मेशन। पहली बात तो प्लेयर फंक्शन को तुमने शुरू करना है कि नल जहां पर है वहां पे कौन सा प्लेयर असाइंड है, वहां से अपना शुरुआत कर देना है। वहां के बाद आफ्टर यू सी के उसके बाद प्लेयर फंक्शन क्या कह रहा है। So if the player function says के player function में remember terminal histories do not go into player function. So then you know के sub histories क्या हैं, right? And sub history will obviously correspond to whichever player was starting the game. Cool? सो इफ वन इज स्टार्टिंग और वन के कुछ मूव्स के बाद टू की बारी आती है, प्लेयर फंक्शन विल टेल यू कि वो कौन से मूव है। प्लेयर फंक्शन ने क्लियरली बताया कि वो मूव है सी और वो मूव है डी, तो उसके एक्शन अवेलेबल सी और डी हैं। और उसके बाद जब प्लेयर टू की बारी आई तो तुम वापस से टर्मिनल हिस्ट्री पे गए, तुमने देखा कि सी के बाद क्या क्या आ सकता है, ई आ सकता है, एफ आ सकता है, दैट इज व्हाट यू डिड। डी के बाद क्या क्या आ सकता है, जी आ सकता है, एच आ सकता है, दैट इज व्हाट यू डिड। एंड देन यू यूज द प्रेफरेंसेस to specify, you choose any numbers that follow that order, and then you finish the specification of your game. Easy? Hmm? Okay. Now let us look at another example. जो इससे थोड़ा ज़्यादा involved है. It involves 3 players. Let's look at that. Okay. So now this is a more sort of realistic example. थोड़ा complicated भी है. इसको समझते हैं. We have political figures, right? So we have Rosa and we have Ernesto, and each of them have to take a position on an issue. So तुम सोच सकते हो कि कोई भी इशू है, मान लो कि एक पर्टिकुलर टैक्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या फिर कोई पॉलिटिकल इशू है कि इस चीज में व्हाट इज द स्टैंड दैट वी शुड टेक, वेदर वी शुड सपोज सपोर्ट यू नो this particular idea or go against it, right? You can think कि ये लोग सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, तो ऐसे होगा कि उसके why am I saying that? Because suppose within a party it makes sense कि अगर सब पार्टी वाले एक ओपिनियन में है, राइट, तो सबके लिए बेहतर है, राइट, बट फिर भी सबका कुछ प्रेफर्ड ओपिनियन है। ये वाला एग्जांपल हमने पहले भी किया है जब हम साइमल्टेनियस मूव गेम कर रहे थे। सो व्हाट यू हैव इज दैट एवरीवन प्रेफर्स, right? So this is a coordination game that we have, that everyone prefers to be together, right? But the idea is that हर किसी का अपना preference भी है। So I would rather have कि हम दोनों एक चीज पे agree करें rather than not agree करें, लेकिन मेरे को एक चीज ज्यादा फेवरेट है। वो ही सेटअप है यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पे सीक्वेंशियल मूव है। ऑलराइट, सो 2 प्लेयर्स पहले हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किए, रोजा और अर्नेस्टो करके 2 पॉलिटिकल फिगर्स हैं, एंड दे हैव टू टेक अ पोजीशन ऑन एन इशू, राइट। ऑप्शंस हैं बर्लिन और हवाना। सो दोनों के पास जो एक्शन अवेलेबल है वो या तो बर्लिन है या तो हवाना है। ये सब समझ जाओ कि यू कैन थिंक दैट some new program has to be launched or they have to से कि कहाँ कैंपेन करने जाना है पहले, इस तरह की कुछ चीज तुम इमेजिन कर सकते हो। सो वेदर टू गो टू बर्लिन और वेदर टू गो टू हवाना, यू कैन थिंक ऑफ मोर यू नो प्लेसेस क्लोज टू आवर होम, जहाँ पे इंडिया के कोई प्लेसेस यू कैन इमेजिन, बट बुक का ही है तो वी कैन वर्क ऑन दैट। द आइडिया इज दैट दे चूज सीक्वेंशली, सो अब साइमल्टेनियस मूव नहीं है यहाँ पर। अ थर्ड पर्सन, एक तीसरा प्लेयर है, हु इज कॉल्ड कार्ल। दिस पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिन्स कि किसकी बारी है पहले, हु विल चूज फर्स्ट। ऑलराइट, both Rosa and Ernesto only care about the actions they choose and they do not care कि किसकी बारी पहले आती है। तो पहले तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे प्रेफरेंस सिंप्लीफाई कर दिया कि मतलब लोगों को ये मतलब नहीं है कि हम हमसे पहले नहीं पूछा, ईगो गेम नहीं है ना। ये नहीं है कि हमसे पहले नहीं पूछा या फिर उनसे पहले कैसे पूछ लिया, अगर मेरे से पहले नहीं पूछा तो मेरा ईगो हर्ट हो गया और मेरा पे ऑफ कम हो गया, नहीं। द ओनली आइडिया इज दैट व्हेन आई मूव आई कैन ऑब्जर्व कि अगर मेरे से पहले किसी ने चला है, मेरे से पहले अगर इफ आई एम रोजा एंड व्हेन इट्स माय टर्न टू मूव, सपोज अर्नेस्टो हैज ऑलरेडी मूव्ड, right? So when I see that Ernesto has moved, I can also observe कि Ernesto ने क्या चूज किया है, बर्लिन चूज किया है या हवाना चूज किया है, right? So then I make my move, and then whatever happens, it is only dependent on the terminal history. It does not depend कि मेरी बारी पहले क्यों नहीं। Okay, now these are the preferences, right? So Rosa prefers outcome, so ये हम preference पे बाद में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब प्रेफरेंस के लिए तो हमको देखना पड़ेगा कि एंड में
क्या टर्मिनल हिस्ट्री के बाद है, पहले हम गेम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ यू विल सी दैट इट हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड कि कब किसकी बारी है, बट इट हैज बीन स्पेसिफाइड कि कार्ल जो है वो पहले डिटरमिन करता है कि किसकी बारी है चलने की। सो ऑफ कोर्स द स्ट्रक्चर ऑफ द गेम टेल्स अस दैट द स्टार्ट ऑफ द गेम कार्ल इज द प्लेयर, एंड कार्ल का काम क्या है, कार्ल डिटरमिन्स हु चूजेस फर्स्ट। सो कार्ल का वो काम करते हैं, तो कार्ल के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ईदर रोजा और अर्नेस्टो, ठीक है। अब जब रोजा की बारी आती है, रोजा के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बर्लिन या हवाना, राइट। So I will actually draw it on the next page because this will be a longish game. So this is what we have. We have Carl starting the game. Choosing either Rosa or Ernesto. If Carl chooses Rosa, Rosa के पास ऑप्शन है कि she chooses Berlin और she chooses Havana. इफ अर्नेस्ट का ऑप्शन आता है, अगर कार्ल ने बोला कि चलो पहले अर्नेस्टो यू चूज, अर्नेस्टो ने भी यही दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है। अब अगर हम ये देखें कि सपोज कार्ल ने रोजा को चूज किया, रोजा ने बर्लिन या हवाना चूज किया, इन ईदर केस फिर बारी आएगी अर्नेस्टो की, आएगी, राइट। Let me also write here. So what I'll do is I will use a different color for the player and a different color for the actions. So for the player, I will use blue or red, right? When Carl chose Rosa and Ernesto, अगर ये वाले नोड पे पहुंचे तो यहाँ पे the player is Rosa, यहाँ पे the player is Ernesto. All right. Now if Rosa chooses Berlin, यहाँ पे कौन प्लेयर है, Ernesto. यहाँ पे भी कौन प्लेयर है, अर्नेस्टो। अब अर्नेस्टो के पास क्या बारी है, अर्नेस्टो के पास भी सेम ऑप्शंस है, बर्लिन या हवाना, सिमिलरली बर्लिन या हवाना, राइट। यहाँ पे व्हेन इट इज अर्नेस्टोज टर्न टू चूज, ही कैन चूज बर्लिन और ही कैन चूज हवाना। अगेन अब जैसे अर्नेस्टो हैज ऑलरेडी प्लेड, व्हाट इज द प्लेयर दैट गेट्स असाइंड ओवर हियर, रोजा, रोजा। और रोजा के पास क्या ऑप्शन है, वही दो ऑप्शन है, right? So Berlin, Havana, Berlin, Havana. Okay, let me just quickly make a bigger diagram so that it's more visible. All right. So what do we have? This is, I've just expanded it horizontally for better visibility. एक बारी फिर से समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हमें ये है कि कार्ल का मूवमेंट होता है, ठीक है। कार्ल का पहला चांस है, कार्ल इज द फर्स्ट प्लेयर। कार्ल कैन द label whatever is written in black, those are the actions. Whatever is written in red, those are the players, right? So Carl is with red, R is for Rosa, E is for Ernesto. All right. B is for Berlin और H is for Havana. तो अभी क्या हुआ, पहले कार्ल की बारी थी, कार्ल ने बोला कि कार्ल हैज टू ऑप्शंस, वन ऑप्शन इज कि कार्ल चूजेस रोजा, रोजा को चूज किया तो रोजा के चलने की बारी आ गई। सो आफ्टर हिस्ट्री ऑफ कार्ल चूजिंग रोजा, रोजा मूव्स, राइट। व्हेन रोजा मूव्स, रोजा के पास दो ऑप्शंस थे, बर्लिन और हवाना, कूल। सो शी ईदर गोज विद बर्लिन और शी गोज विद हवाना। देन सपोज शी गोज विद बर्लिन, अब अर्नेस्टो की बारी है, सीक्वेंशियली मूव कर रहे हैं दोनों, अर्नेस्टो ने भी देखना है कि बर्लिन या हवाना चूज करना है। द सेम थिंग विल हैपन इवन इफ शी चूजेस हवाना, फिर से अर्नेस्टो की बारी आएगी, अर्नेस्टो कैन डिसाइड वेदर टू गो विद बर्लिन और हवाना। द सेम थिंग विल बी डन व्हेन इंस्टेड ऑफ रोजा कार्ल चूजेस अर्नेस्टो। सो अर्नेस्टो फिर विल डिसाइड के बी या एच चूज करना है, वट एवर ही चूजेस उसके बाद रोजा की बारी आनी ही आनी है, एंड देन रोजा विल अगेन मेक अ चॉइस बिटवीन बी और एच। This is the entire extensive form of the game. अब इसमें क्या चीज रह गई है, पहले तो हम प्लेयर फंक्शन को रफली वो कर सकते हैं। So what do we have, that what player is assigned at the starting of the game, card, right?
player assigned after the history R is R. रोजा, अगर हिस्ट्री R है मतलब हम यहाँ पर हैं, उसके बाद कौन सा प्लेयर असाइंड है? रोजा। उसके बाद प्लेयर असाइंड व्हेन द हिस्ट्री इज E, अर्नेस्टो, राइट? अगर कार्ल ने अर्नेस्टो चूज किया तो अर्नेस्टो की बारी आ जाती है। उसके बाद क्या, और भी तो हिस्ट्री बची है ना, अभी तो गेम खत्म नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दैट R हो गया, उसके बाद B हो गया। अगर हिस्ट्री ये है R and then B, what is the response of the player function? Ernesto. And this is the same when it is R and H. So ये same हो गया. So what you have that the player function when the history is R comma B is the same as the response of the player function when the history is R comma H and it is E. इन दोनों histories के बाद, इन दोनों histories के बाद अर्नेस्टो की बारी आती है। और दूसरा एग्जाम्पल, लास्ट केस क्या है? दैट द प्लेयर फंक्शन व्हेन द हिस्ट्री इज E कॉमा B एंड E कॉमा H, रोजा की बारी आती है। ऑलराइट, E कॉमा B, E कॉमा H, देन यू गेट योर रोजा प्लेइंग। इसके बाद अगर तुम कोई भी हिस्ट्री लिखने जाओगे तो वो गेम को टर्मिनेट कर देगा, एंड दैट मीन्स योर प्लेयर फंक्शन हैज नो फर्दर रोल। कुल यहां तक हमने प्लेयर फंक्शन, तो हमने प्लेयर्स कार्ल और नेस्तो रोजा है, प्लेयर फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया है। टर्मिनल हिस्ट्रीज इसमें अगर तुम लिखना चाहो, सो द टर्मिनल हिस्ट्रीज विल बी व्हाट? What are the terminal histories? R, B, B, R, look at this. Yeah. R, B, B, R, B, H. R, H, B, R, H, H. एक सेट जब रोजा चूज हुई। दूसरा क्या? E, B, B, E, B, H. E, H, B, E, H, H. ये सारे टर्मिनल हिस्ट्रीज हैं। इसका मतलब कि इस गेम में ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, इतने सारी पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि सपोज लेट्स राइट इट, सो व्हाट डू वी गेट? वन टर्मिनल हिस्ट्री इज R followed by B followed by B. This is saying what? When it's player one's chance to move, Carl chooses Rosa, Rosa chooses Carl chooses Rosa, Rosa chooses Berlin, and then Ernesto chooses Berlin. एक पॉसिबल आउटकम ये है, ठीक है। दूसरा पॉसिबल आउटकम क्या है? कार्ल चूजेस रोजा, रोजा चूजेस बर्लिन, एंड देन अर्नेस्टो की बारी आई, अर्नेस्टो चूजेस हवाना। और क्या ऑप्शन है? कार्ल चूजेस रोजा, रोजा चूजेस हवाना, एंड अर्नेस्टो चूजेस बर्लिन। RHB, दिस इज व्हाट इट मीन्स। कार्ल चूजेस रोजा, रोजा की बारी आई उसने हवाना चूज किया, अर्नेस्टो की बारी आई उसने बर्लिन चूज कर लिया। पॉसिबल, ये भी हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कार्ल चूजेस रोजा, रोजा चूजेस हवाना, एंड अर्नेस्टो also chooses Havana. Then the other is Carl now chooses Ernesto. Ernesto chooses Berlin, and then Rosa chooses Berlin. फिर Ernesto, Berlin, Havana. फिर Ernesto, Havana, Berlin, and Ernesto, Havana, Havana. These are 8 possible outcomes, 8 terminal histories of the game. इस तरीके से यू विल राइट, यू विल सी कि गेम में जब ये टेबल, जब ये डायग्राम बन गया है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या सब हो सकता है इस गेम में। रिमेंबर, ये तुम्हें गेम का लाइन ऑफ मतलब टाइमलाइन फॉलो करना है ना। तुम भगवान नहीं हो या तुम इस
3D वर्ल्ड में ही रहते हो, you do not operate on the fourth dimension of time, right? So you do not jump timelines. एक बार ही तुमने इस टाइमलाइन में कमिट कर दिया तो इसके बाद इस टाइमलाइन के एक्शंस तुम नहीं उठा सकते हो, ठीक है ना? जो भी टाइमलाइन में कमिट कर दिया है वही चीजें स्पेसिफाई करनी है टर्मिनल हिस्ट्री में, ये तो कूद के नहीं जाना। ऑलराइट, नाउ फाइनली वी विल गो टू प्रेफरेंसेस। अभी तक हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि दोनों के प्रेफरेंसेस कैसे हैं। Now let us look at how the preferences are specified in the book, and then we will try to replicate it, right? So look at this. Rosa prefers the outcome in which both she and Ernesto chooses B, right, to that in which they both choose H, and prefers this outcome to either of the ones in which she and Ernesto choose different actions. This is exactly what I said. दोनों के केस में अब रोजा का क्या है, रोजा को सबसे बेकार आउटकम उसके लिए ये है कि उसने और अर्नेस्टो ने अलग अलग ऑप्शंस चूज किए। ऑलराइट, रिमेंबर ये साइमल्टेनियस मूव गेम नहीं है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि पिछले वाले ने क्या किया है, उस फ्रेमवर्क में अब हम देख रहे हैं। सो व्हाट वी हैव इज दैट इन ईदर ऑफ द केसेस वेयर either of the ones in which she and Ernesto choose different actions is her least preferred outcome, ठीक है? उसके बाद उसका बेस्ट आउटकम ये है कि दोनों बी चूज करें, राइट? शी प्रेफर्स द आउटकम इन विच बोथ शी एंड अर्नेस्टो चूज बी। उसके बाद जब दोनों एच चूज करें, अर्नेस्टो का थोड़ा डिफरेंट है। अब अर्नेस्टो को भी नहीं पसंद है कि दोनों अलग अलग आउटकम्स चूज करें। शी इज इंडिफरेंट बिटवीन द लास्ट टू आउटकम्स एज आई सेड, राइट? तो अलग अलग चूज करेंगे उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है, उसके लिए वर्स्ट है वो, और दोनों इक्वली बैड है। Ernesto's preference for, in the case of Ernesto, preference differs from Rosa in the roles of B and H. मतलब जहां पे for Rosa both agreeing on B, बर्लिन अगर दोनों चूज कर लें तो रोजा के लिए बेस्ट है। इन केस ऑफ अर्नेस्टो अगर दोनों हवाना चूज करें तो अर्नेस्टो के लिए बेस्ट है, राइट? सो दिस इज लाइक जो हम लोग बैटल ऑफ सेक्सेस कर रहे थे। दोनों को साथ रहना पसंद है ना? दोनों को साथ रहना पसंद है, लेकिन एक का स्टैंड अप फेवरेट है, एक का क्लबिंग फेवरेट है, राइट? सो अगर दोनों अलग अलग जगह जाते हैं तो दोनों के लिए वो इक्वली खराब है। लेकिन एक को स्टैंड अप ज्यादा पसंद है, उसको पसंद है कि दोनों मिलके स्टैंड अप जाएं, और एक को पसंद है कि दोनों मिलके क्लबिंग जाएं। इसमें भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा सीन है, लेकिन इसमें सीक्वेंशियल है और इसमें एक थर्ड प्लेयर भी इन्वॉल्व है। थर्ड प्लेयर क्या है? कार्ल्स प्रेफरेंस। कार्ल्स प्रेफरेंस आर दी सेम एज दैट ऑफ अर्नेस्टो। सो कार्ल को भी हवाना बेस्ट ऑप्शन है, राइट? बर्लिन सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, एंड डिसएग्रीमेंट वर्स्ट ऑप्शन है। ऑलराइट, सो यू कैन थिंक ऑफ कार्ल एज सम लीडर जो इनके ऊपर है, इन दोनों का बॉस है, एंड दिस पर्सन डिसाइड्स कैसे, पहले तुम बताओ और फिर तुम बताओ। तो जिसकी भी बारी पहले आई उसने अपना पे चूज किया, और उसके बाद दूसरे वाले ने चूज किया। लुकिंग एट द रिजल्ट्स वी विल सी कि प्रेफरेंस किसका क्या है। ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव इज दैट इन द प्रेफरेंसेस, या देखो गेम कहाँ गया, यस। सो remember the best, yeah, the best for, let's suppose pick रोजा, है ना? तो रोजा के लिए बेस्ट क्या है? रोजा के लिए बी, बी वाले केसेस बेस्ट हैं, बी बी। रोजा के लिए ये दो केसेस बेस्ट हैं, जहां पे दोनों बर्लिन चूज करें। उसके बाद क्या आता है रोजा के लिए? जहां पे दोनों हवाना चूज कर लें, राइट? वर्स्ट क्या होता है? जहां पे she chooses Berlin, he chooses Havana, she chooses Havana, he chooses Berlin, and over here also Berlin Havana, Havana Berlin, ये उसके लिए वर्स्ट है। सो जो वर्स्ट वाले हैं उनको पहले हम 0 दे देते हैं, है ना? तो लेट अस से दैट player 1, let's say that player 1 is Carl, player 2 is Rosa, and player 3 is Ernesto, and this will just help us put things in order. So रोजा के लिए सबसे वर्स्ट आउटकम है ये वाले, है ना? So H and B, so Rosa gets a 0 over there,
B and H, Rosa gets a 0. B and H, Rosa gets a 0. H and B, Rosa gets a 0. उसके बाद 1 किस में मिलेगा? H और H में, है ना? 3 ऑप्शंस हैं उसके पास. Disagreement, agreement on H, agreement on B. So agreement on H is the middle outcome. So H और H में Rosa gets a 1. H and H. H and H, Rosa gets a 1. And the best option is B and B. So B and B में Rosa gets a 2. B and B, Rosa gets a 2. So रोजा के पर्सपेक्टिव से सारे टर्मिनल हिस्ट्रीज में उसका यूटिलिटी हमने फिल कर दिया है. सारे टर्मिनल हिस्ट्रीज हो गए. अब हम चलते हैं अर्नेस्टो के ऊपर. ठीक है, एक बार ये अर्नेस्टो का कर लिया तो कार्ल का तो सेम ही है, राइट? इट सेज दैट the preferences of Carl are the same as that of Ernesto. So we can just fill up for one of them. Let's do for Ernesto. So Ernesto के लिए क्या था बेस्ट आउटकम? अच्छा, पहले वर्स्ट आउटकम देख लेते हैं. वर्स्ट आउटकम दोनों के लिए यही है कि वो डिसअग्री करें. तो जहां भी रोजा का 0 है वहां पे अर्नेस्टो का भी 0 है. डिसअग्रीमेंट दोनों को ही पसंद नहीं है, राइट? एंड वी कैन ऑल्सो से कि जहां पे अर्नेस्टो का 0 है वहां पे कार्ल का भी 0 है. Disagreements are the worst outcomes. All right. So इनका पूरा हो गया, हम इनको ब्रैकेट में डाल देते हैं. Cool. Now for Ernesto the second best option is BB. तो 0 तो फिल कर दिया, अब BB फिल कर देते हैं. So this will give Ernesto a payoff of 1. This will give him a payoff of 1. And yeah. And finally wherever it is HH, ये अर्नेस्टो के लिए बेस्ट ऑप्शन है, वहां पे अर्नेस्टो का पे ऑफ होगा 2. एंड सिंस वी नो के कार्ल और अर्नेस्टो का प्रेफरेंस सेम है, तो जो भी अर्नेस्टो का नंबर है वो ही कार्ल का नंबर होगा ऑफ प्लेयर 1. सॉरी, दिस इज 2. This is again 1 and this is 2. This is your entire game. कोई भी गेम होगा उसको ऐसे ही सॉल्व करना है. ये वाला जो मैंने द रीजन दैट आई एक्चुअली डिड दिस एग्जांपल इन द लेक्चर इज बिकॉज इसमें कुछ भी क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है. सो ऑल द थिंग्स यू हैव टू फिगर आउट ऑन योर ओन. यू हैव टू फिगर आउट के प्लेयर फंक्शन कैसा है, कौन कब किसके बाद किस प्लेयर की बारी है, राइट? यू हैव टू फिगर आउट के टर्मिनल हिस्ट्रीज क्या है, पहले तो किसकी बारी है, किसके क्या एक्शंस हैं, उसके बाद टर्मिनल हिस्ट्रीज क्या है, और फिर प्रेफरेंसेस क्या है, उसके हिसाब से यू हैव टू गिव दी numbers, right? So what we have is that there are various possibilities which we discussed over here. हर टर्मिनल हिस्ट्री में हर प्लेयर का कुछ प्रेफरेंस है ना? एंड द फर्स्ट नंबर कॉरेस्पॉन्ड्स टू कार्ल, द सेकेंड नंबर कॉरेस्पॉन्ड्स टू रोजा. First number of all these brackets correspond to Carl, second number to Rosa, third to Ernesto, right? So when we are looking at a case like this is where if the history is Carl choosing Rosa, Rosa choosing Berlin, and then Ernesto choosing Berlin, then Carl and Ernesto get a payoff of 1. Rosa gets the highest payoff. If we are under the history where Carl chooses Ernesto, Ernesto chooses Berlin, and Rosa after that chooses Havana, so this is the worst for all of them. सबको 0 payoff मिलता है. And similarly, you can find for all the other terminal histories as well. All right. Okay, cool. So now the final thing that we will do today is to talk about some sort of a solution to this game. Remember, हम सारे गेम्स को स्टडी इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये खूबसूरत सा रंग बिरंगा डायग्राम बना के उसको बीच में छोड़ दें. We are looking for some sort of a solution, some sort of an equilibrium concept, right? We will differentiate between a solution and an equilibrium in the case of this extensive game, and you will see how. So let us start with solution या outcome, or then we will go to what we call equilibrium, which we will do in the next lecture. So the first thing that we're going to do right now is a solution concept, right? Which we also say outcome.
All right. So the question that we are going to answer is that what will be the outcome of the entry game? हमने बहुत complicated games बना लिए हैं अभी, but we will use the simpler game to the for understanding the concept of solution. What will be the outcome of the entry game? Right? Now, entry game के तरीके से सोचना है तो चलो सोचते हैं. This is what we have. Where is the entry game? Yeah, this is the game. अब सोचो कि इसमें जो चैलेंजर है वो कैसे रीजन करने वाला है. चैलेंजर को सोचना है कि इफ आई स्टे आउट, राइट, I'll get a payoff of 1. So if I stay out, I will get a payoff equal to 1. But I do have a better, matlab this entire game does hold something that is more promising for me, right? My best possible outcome कि मैं घुस जाऊं, right, और incumbent मुझे accommodate कर ले, then it will be the best possible outcome for me. But घुसने के साथ रिस्क भी है. रिस्क क्या है कि मैं घुस जाऊं और incumbent प्राइस वॉर छेड़ दे, राइट? मेरी तो बैंड बच जानी है. बट थिंक अबाउट के इनकम्बेंट को, दिस इज अ गेम ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, बट दिस इज अ गेम ऑफ ऑल्सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन. तो उसको अपने पे ऑफ तो पता ही है इनकम्बेंट को, बट सॉरी इनकम्बेंट बोल रहे हैं, चैलेंजर को. दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द चैलेंजर, राइट? सो द चैलेंजर थिंक्स दैट आई कैन स्टे आउट और आई कैन एंटर. एंट्रिंग में रिस्क है कि इनकम्बेंट विल स्टार्ट अ प्राइस वॉर. नाउ द चैलेंजर नोज के मेरे को अपने पे ऑफ्स तो पता ही है, बट मुझे तो इनकम्बेंट के भी पे ऑफ्स पता है. एंड देन यू कैन थिंक ऑफ के इनकम्बेंट के लिए बेस्ट क्या होगा. स्टेइंग आउट इज एन ऑप्शन, बट फॉर लाइक फॉर चूजिंग द ऑप्टिमल एक्शन, राइट, चैलेंजर विल थिंक कि अगर मैं घुस जाऊं and the incumbent accommodates me, incumbent का पे ऑफ होगा 1. On the other hand, if the incumbent tries to act smart and मेरे साथ fight करे, तो incumbent का खुद भी तो नुकसान होगा. And comparing these two possibilities, that I do enter, right, and then the incumbent has a choice whether to accommodate me or fight me. Once I enter, it will be better for the incumbent to accommodate me. Fighting is so costly for the incumbent that if I enter, incumbent will never do that. Right? It is true that from the perspective of the incumbent, it is best कि भाई बाहर ही रहे challenger. लेकिन अगर challenger घुस गया तो incumbent कर क्या लेगा? If the challenger actually enters, it is better for the incumbent to accommodate than to fight. Fighting is too costly. Fighting is the worst outcome for the incumbent as well. So this is, this kind of reasoning, इसको बोलते हैं backward induction. कि तुम चैलेंजर हो, तुमने अपने एक्शन से तो सोचा ही कि क्या होगा, बट तुम गेम को बैकवर्ड में सॉल्व करने चले हो. तुम्हें लग रहा है कि अगर मान लो कि ये वाला हिस्ट्री अगर करता है, आई एक्चुअली चूज टू एंटर, देन from the point of view of incumbent, best क्या होगा? Incumbent will have to acquiesce, right? So if I do enter, I will definitely land here. There is actually no risk of landing here. So the actual comparison is between this and this. If I stay out, I will get 1. But if I enter, आई नो कि इनकम्बेंट का पे ऑफ ऐसा है कि वो हम इस वाले पे कभी लैंड ही नहीं करेंगे, हम यहीं पे रहेंगे. एंड देन आई एम कंपेयरिंग 1 over here to the 2 over here, and definitely incumbent will go with this. This is a solution concept known as backward induction. तो इस गेम का solution क्या होगा? Incumbent will enter, right? The solution is that incumbent will enter and, sorry, why do I keep on? Challenger will enter and incumbent
will accommodate. Right? This line of argument, इस तरीके से जब एक चैलेंजर सोच रहा है अपने मूव्स के बारे में, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड इंडक्शन, कि तुमने गेम को पीछे से सॉल्व करना शुरू किया, कि अगर हम यहाँ पे पहुंच गए तो यहाँ पे जिस प्लेयर की बारी है वो प्लेयर क्या करने वाला है। एज ए चैलेंजर तुम सोचोगे अगर अगर मैं घुस गया तो इनकम्बेंट को तो अकोमोडेट करना ही पड़ेगा, उसके लिए फाइटिंग अच्छा ऑप्शन नहीं है। So then the real choice is between me entering and the incumbent acquiescing and me staying out. Of course, entering is the better option. Right? This is called backward induction. Now, let us change the model payoffs a bit. ये एक backward induction है. Now, the problem is कि ये हर बार काम नहीं करेगा. देखते हैं कैसे. Okay, so this is what we had. This was your challenger. Challenger decides to stay in or come in or stay out. This is where the game ends. Challenger gets 1, incumbent gets 2. Here is where the incumbent plays, decides whether to acquiesce or to fight. And now suppose इस वाले जहां पे गेम एंड होता है, यहाँ पे the payoff is like this. I have changed it a bit. What I have done is, jab the incumbent actually enters, when the challenger actually enters, tab for the incumbent, acquiescing and fighting gives the same payoff. You can think of it कि acquiescing also reduces payoff. क्यों? क्योंकि acquiesce का मतलब है अपना थोड़ा तो market share देना पड़ेगा. फाइटिंग ऑल्सो रिड्यूसेस पे ऑफ, बट अब हम ये नहीं कह रहे कि फाइटिंग से इनकम्बेंट का बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो एक एस्टैब्लिश्ड फर्म है, थोड़ा नुकसान है, कुछ खास बात नहीं है। तो अगर तो द चैलेंजर डिसाइड्स टू एंटर, चैलेंजर डिसाइड्स टू गेट इन, चैलेंजर इज नाउ नॉट श्योर कि ये इनकम्बेंट क्या कर सकता है, क्योंकि उसके लिए दोनों ऑप्शंस एक बराबर है। इफ इट अक्वेजेस तब भी उसका थोड़ा नुकसान होगा, बट इफ इट फाइट तब भी उसका उतना ही नुकसान होगा। एंड now the challenger does not know what to do, right? So the challenger does not know कि यहाँ पे मेरा comparison out रह के 1 के साथ 2 का है या 1 के साथ 0 का है ना? ये confusion है. And this is what happens if you, like, a lot of times backward induction in this simplistic form does not work. और इसीलिए हमको एक मतलब we have to evolve a more comprehensive, something more comprehensive to solve this thing, right? So we will now work with the equilibrium approach on the lines of Nash equilibrium. Okay. So before I end today's class, I will introduce you to what is called a strategy. Okay. So what, first of all, we need, so this implies that backward induction will fail over here. It will not give a clear answer, right? Which means that equilibrium concept, something more comprehensive is needed, right? अब थोड़े building blocks हम आज cover कर लेते हैं in terms of strategy, ठीक है? So I will just define strategies for today and then we will do it in the next lecture. Now let us define what are called strategies. Now, a strategy for an extensive game is what is called a plan of action, right? Let's define it fully. So for a player I, it is a function that assigns an action after each history
where the player function, right, chooses the player I. All right. Let us work with this example to make it more clear. We will work with this example. ये वाला, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल के साथ करते हैं. Let me just rewrite this example and then we will continue. Okay, so I have not put in the payoffs. यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है. तो अभी देखो कि प्लेयर 1 का स्ट्रैटेजी क्या है. The strategy we will use S1, right, which is the strategy of player 1. प्लेयर 1 का स्ट्रैटेजी क्या है? प्लेयर 1 की बारी कब आती है मूव करने की? हिस्ट्री, नल हिस्ट्री के बाद, राइट, यहाँ पे. तो यहाँ पे प्लेयर का पास स्ट्रेटजी है या तो चूज डी या तो चूज सी और यू चूज डी. दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन, है ना. तो ये वाला तो हम कर चुके हैं. यहाँ पे एक्शंस ही स्ट्रेटजी है. लुक एट द स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर 2. व्हाट इट सेज इज, फॉर एवरी प्लेयर आई इट विल स्पेसिफाई व्हाट, it is a function that assigns an action after each history where it is the player I's turn to move. यहाँ पे प्लेयर आई का टर्न कब कब है? या तो हिस्ट्री सी के बाद या तो हिस्ट्री डी के बाद. प्लेयर 2 का चांस कब आता है? प्लेयर 2 की चांस आती है चलने की हिस्ट्री सी के बाद और हिस्ट्री डी के बाद. मतलब जो स्ट्रैटेजी का फंक्शन है ना, दिस एस फंक्शन, that has to specify an action for player 2 after history C as well as after history D. That will comprise of one strategy. After history C, suppose ये player function E देता है, and after history D, suppose G. This is one strategy. दूसरा ऑप्शन क्या है? C के बाद E और D के बाद H, C के बाद F और D के बाद G, फाइनली C के बाद F और D के बाद H. ऑलराइट, ऑलराइट, इसको समझने की कोशिश करते हैं. हमने क्या बोला कि स्ट्रैटेजी एक प्लान ऑफ एक्शन है. ना सपोज कि तुम जो हो वो प्लेयर 2 है ना. तुम एक प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हो फॉर ऑल द पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन, राइट. यू नो कि तुम्हारी बारी आएगी, चाहे प्लेयर 1 सी चूज करे चाहे प्लेयर 1 डी चूज करे. नाउ व्हाट आर द पॉसिबल स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन हैव? थिंक अबाउट इट. सपोज तुम्हारा एक स्ट्रैटेजी ये हो सकता है दैट इफ द प्लेयर 1 chooses C, if player 1 chooses C, I will choose E, and if player 1 chooses D, I will choose G. ये एक स्ट्रैटेजी है. दूसरा स्ट्रैटेजी क्या है? प्लेयर 1 ने C चूज किया, आई विल गो विद E. प्लेयर 1 chooses D, I will go with H. सिमिलरली प्लेयर 1 chooses C, तो मैंने F चूज करना है और D के केस में G चूज करना है. फाइनली F and H. Right? So what we are doing over here is we are specifying for every player. Player 1 के लिए कोई ऑप्शंस है नहीं. प्लेयर 1 को या तो C चूज करना है या D चूज करना है. उसके लिए ये ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज नहीं है, बट प्लेयर 2 के लिए है. तो प्लेयर 2 के एक्शंस क्या है? हर बार जब उसको मौका मिले तो वो क्या 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 चूज कर सकता है या कर सकती है, राइट. This is how we specify the strategy and we can think of it as the entire plan of action जो प्लेयर 2 ने बना के रखा है. हम रैशनल एजेंट्स की बात करते हैं. ये एजेंट इतने रैशनल है कि हर वक्त अपना एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन रेडी रखते हैं. जब भी उनके बारी आ सकती है चलने की, उन्होंने अपना एक्शन रेडी रखा हुआ है कि अगर ये होता है तो ये करेंगे, ये होता है तो ये करेंगे. एक पॉसिबिलिटी ये है. फिर अगर ये होता है तो ये करेंगे, कुछ और होता है तो वी विल चूज अ डिफरेंट एक्शन. All the different combinations that can exist, and the order matters, right? So this is a permutation. The order matters. कि इस वाले में जो पहला एलिमेंट है वो या तो E हो सकता है या तो F हो सकता है.
और जो दूसरा एलिमेंट है वो या तो G हो सकता है या तो H हो सकता है. All right. This is how we specify the strategy of a player. Hmm? This is different from what we have been calling a strategy or an action for in the simultaneous game, जहाँ पे ये alternate scenarios arise नहीं हो रहे थे ना. वहां पे तो तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी आई, तुमने कुछ ऑब्जर्व थोड़ी किया कि सामने वाले ने क्या चला. यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर रहे हो. Alright, so this is the strategy and now the Nash equilibrium. जो हम equilibrium concept study करेंगे वो actions के terms में नहीं होगा, वो strategies के terms में होगा. ठीक है. All right, so I will stop here. I guess this is a lot for one class. The next class we will continue with doing another example with strategies, and then we will discuss the Nash equilibrium and finally how we will refine the concept of Nash equilibrium to suit a game that is of this kind and extensively. Okay, I hope this was helpful, all of you, and I will see you in the next lecture. Bye bye.